Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Amna Niazi. She is she's had quite a journey because she started or actually worked with Sadaf in Siddhi Says, which was one of the earliest blogs that came out on Instagram, and they were one of the top ones. They did an incredible job, so she ran that. She's also now a food blogger and content creator. We have talked about her life journey, how she became a chef eventually, why she did everything she did, and especially we talked a lot about parenting and raising kids. It's a very interesting, insightful conversation. It's quite engaging. I know that you are going to enjoy it and learn a lot from it. So without any more delay, here's Amna Niazi. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. How are you? I'm very happy. It's my first ever podcast. मैं देखती हूँ podcast और मैं सोचती हूँ यार बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं, तो आज मुझे भी किसी ने बुला लिया. आप भी काफी इंटेलिजेंट है, मुझे ये पता है, मुझे वो वाइब्स आती हैं. Oh God, किसी ने पहचाना. Thank you. Thank you so much for taking out the time. Thank you. Doing this really with happy me. to be here. In fact, जब मैं अपनी लिस्ट के बारे में सोची थी, तो right off the bat your name was in my head कि मैंने आना से बात करनी है. I think there's so much there. I don't know, but I don't know if it's true or not. लेकिन मुझे कुछ लोगों को देख के, even if it's just their online persona, जिसमें वो शायद कुछ भी ना डाल रहे हो, लेकिन मुझे लोगों को देख के I think I can tell कि अच्छा, I think they have stuff to share. They have depth maybe. तो मैं इस तरह लोगों को बुलाती हूँ. So yeah, I felt that nice about you. It's so nice to hear that about myself. I hope you're not disappointed by the end of this. I do have a weird sense of humor. Acha. So Amna, I'm gonna dig into your journey, ठीक है? And I want to talk to you about basically your personal and professional life story. Okay. So I want to understand, have you always lived in Lahore? Is this where you're from? Are you born and raised here? Always. All of my life. I think that is एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर ली हुई है कि मैंने लाहौर में बहुत रह लिया. I was born here, raised here, got married here, had kids here, and I don't know, maybe I'm going to go to the next world from here. Lekin yeah, this is where I'm from. This is home. Yes. Yeah. So where did you get your early schooling from here? I was in convent of Jesus and Mary. Yes, many years ago. सारे nun rules के अंदर. So that is, and then I did my masters from GC in English literature. So I guess I've been to some really interesting institutions. I'll say interesting because growing up, convent was a very different world from the outside world. हमारा एक बहुत discipline था और हम बहुत सारे, we were a big mix of people, like I say sometimes that we were the untouchables से लेकर plastics तक सब था. In convent, and I was like neither, not here, not there, a middle class child, and there were many others like me also. और उसने, I think growing up, people say that my schooling has contributed a lot to my success and all. I think it's just really contributed a lot to my journey because I got a lot of traumas from there as well. I got a lot of lessons that I realized after growing up. लोग कहते हैं ना, being in a mix of people is very good. Growing up, I think it's very confusing. Okay. So I grew up as a very confused person. I didn't know who I was. मेरे साथ नवाज शरीफ की बेटी भी पढ़ती थी और हमारे janitor की बेटी भी पढ़ती थी. And then there was such a divide over there कि जो बीच वाले बच्चे थे ना, वो बेचारे मेरी तरह के थे कि हम So I feel straight off the bat, I got into a very confusing situation, very challenging. I think school life for me was very challenging. Okay. Personality development के हिसाब से, I was very shy. I was very underconfident. I didn't know where I belonged. And I think then when I went to college and university and I started debating, that's when I started finding my voice and finding myself. Okay, so debating was that. I was a debater. On the Lahore circuit, I think मेरी age group के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो I was quite a terror. अच्छा, पता है क्या, मुझे recently, so I have a friend. कल मैं उनके घर dinner पे गई हुई थी.
तो वो मुझसे पूछे थे अच्छा आपकी पॉडकास्ट लिस्ट में कौन है ये वो, तो मैंने कहा कल मेरा आमना नियाज़ी के साथ है। तो देन ही वाज लाइक कि ओ अच्छा यार वो तो हम जब छोटे होते थे ना वो हमसे हमेशा बड़ी थी, लेकिन शी वाज लाइक द लाइक डिबेटिंग क्वीन, हम उनको सब देखते थे और सबका उन पे क्रश था, सबका उन पे क्रश था डिबेटिंग सर्कल में तो सबका उन पे क्रश था। ये मुझे तब नहीं पता था मुझे पता लग रहा है, मैं थोड़ी तैयारी होकर चली जाती। तो मैंने कहा अच्छा, बिकॉज तब मुझे पता चला कि अच्छा डिबेटिंग इज समथिंग that was part of your life. So I that is where I think I found my very good friends there, and I think I really found confidence there. Or I was maybe well liked by them, but I was also quite hated. Achha, why do you say that? Why were you hated? I think more than because maybe not hated but disliked, because I was very ek to I used to win a lot. I don't think people like that. समझ गए. And then also I was very vocal about whatever I wanted to say. थोड़ा सा मैं बहुत aggressive होके, you know, like I said, I was telling you before, I came from a very angry person to now a very calm person. I used to take all that angst out, you know, on the stage. So basically you're saying that you kind of had a more intimidating personality at that time. I did. I don't know if I was intimidating, but I think people got intimidated. Okay. Yeah. There's a difference. Yeah, but I mean, I never thought I was. मुझे तो लगता था हर डिबेट से पहले कि मैं हारूंगी, मुझे भूल जाएगा, मुझे तो इस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं क्या बोलूंगी, you know. So अंदर से I was not confident, but somehow, you know, when I had a mic in front of me, something used to happen. That's nice. Yeah. And then so you were just going around different schools, colleges, doing competitions. Colleges, I was doing a lot of क्या कहते हैं, Pakistan competitions and all of that. So I mean, there was some spectacular debaters, और लड़के खास तौर पे, you know, मेरी अपनी टीम के लड़के मुझे उनके सामने मैं फुस थी. They were so good, you know. But ये है कि it just gave me a really good platform and exposure. And confidence अंदर से तो नहीं था, बट जाहिर है जब आप इतने सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज और रोल ऑफ ऑनर फ्रॉम यूनिवर्सिटी देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ शायद कोई बात है, बट फिर भी आई वॉज अ वेरी I don't know if that word fits here, but I had imposter syndrome. You know, I was very अंदर से मुझे लोग वाह वाह करेंगे, बट अंदर से मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था किसी और की बात करें. You know, I was that confused kid growing up who didn't know where I belong, you know. So as a 20-year-old, 18-year-old, when all of this was happening to me, मुझे ऐसे लगता था that I'm watching a movie and they're praising someone else. Somebody else is... Because you didn't believe that about yourself. No. Every time they would announce the winners and I'd go up on the stage to get the trophy, you won't believe me, I have zero memory of it because I think I used to fog out. So अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि ये सब होता था. I have लोगों को memories होती हैं कि हम जीते थे, याद है ये हुआ था वो होता, मुझे कोई memory नहीं. You just know but you don't remember. I know because I have all of that and I know that I did win it. Of course, But I think somehow my mind used to zone out as if I'm watching somebody else win this. And that all came from an internal confusion. और नहीं मानते लोग. मेरे बहुत करीबी दोस्त उस वक्त ये बात मैं किसी को करती तो नहीं मानते थे. So you know, I really want people to understand कि ऐसा होता है. Somebody who might seem very confident and you know go getter और वो जैसे आपने कहा debating queen, अंदर से you know zero confidence. Yeah. And growing up, so that's so interesting. And growing up, what was it that you wanted to be? कि मैंने बड़े होके क्या wanted to be a mom. Yes. So you didn't have like a big ambitious career goals. No, I had no confidence to have any ambition. You know, again, like goes down to the same thing. I was invisible. I thought and I wanted to be a mother. I always knew कि मैंने शादी करनी है और मेरे बच्चे होंगे. और शादी भी इसलिए नहीं करनी कि I need a husband. I'm sorry अदील, but मैंने शादी इसलिए करनी है कि मेरे बच्चे. हाँ, my mom was like that. My mom was like मैंने शादी इसलिए करनी थी ताकि मेरे बच्चे हो. I was very clear कि I want to, and I was not also in a hurry to get married. I got married at 29. इतनी सी मेरा ख्याल है अकल थी कि बंदा भी ठीक होना चाहिए. पहले ही रिश्ते पे हाँ नहीं कर देनी. But yeah, I was very clear.
एंड आई थिंक और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं. उन्होंने द फर्स्ट थिंग दे सेड टू माय हस्बैंड व्हेन वी गॉट एंगेज्ड इज कि तुम्हें पता है ना ये तुमसे क्यों शादी करेगी. यू नो व्हाट शी वांट्स. सो आई वाज वेरी नो, आई हैड नो एम्बिशंस बिकॉज आई हैड नो कॉन्फिडेंस टू थिंक कि आई कैन हैव एन एम्बिशन. माय एम्बिशंस वर वेरी स्मॉल. मैंने चेल्सी के स्टेडियम में जाके हॉट डॉग बेचने हैं क्योंकि मुझे फुटबॉल का शौक था. यू नो मैंने इंग्लैंड की जो वो नहीं होती टीम, उसकी मैं किट मैनेजर बन जाऊंगी. इस तरह के छोटे छोटे जो मुझे शौक थे उनके साथ मेरे एम्बिशंस अटैच थे. लेकिन कोई करियर एम्बिशन नो नो नो, लगता ही नहीं था कि वो कुछ मुझे आता है. अच्छा, सो देन व्हेन यू ग्रेजुएटेड कॉलेज, तो फिर आपने क्या, अब्बू ने कहा इंग्लिश लिटरेचर में. अच्छा, हाँ, अब्बू ने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर करना है क्योंकि आप जब इंग्लिश लिटरेचर कर लेते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं. मुझे लगता है दैट आई कुड हैव बीन, नाउ दैट आई थिंक अबाउट दैट आमना, I think that I could have been a lot of different things. I think I could have done really well with a business degree. I think I could have been a good actor, but acting तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. So I feel that I could have done a lot more. But अब्बू ने उस वक्त का इंग्लिश लिटरेचर, और मुझे डिबेटिंग की हाई पे थी मैं. सही. और उस वक्त GC की डिबेटिंग टीम was like the debating team to be in. So मैं कहा मैं GC जाऊँगी और मैं डिबेटिंग करूँगी. And I had really top scores in bachelors, like you know किसी की 500 से ऊपर मार्क्स नहीं आते थे उस वक्त. And I had a big score. And still I thought अच्छा नहीं, मैं इंग्लिश लिटरेचर ही कर लेती हूँ, मुझे GC जाना है. I want to do this because I was so happy doing that. Yeah, you were passionate about debating, so you were focused on that. I was happy because I finally had a feeling I'm good at something. I feel you. Yeah, I understand. Yeah, I go to places और लोग कहते थे आमना नियाज़ी आ गई. You know, so आपको लगता था कि कोई देख रहा है शायद मुझे. You know, तो मैंने English, I don't regret it because I think that English literature is a very deep subject if you do it properly. It's got a lot of depth. Also, like my mom, she was in Saint Denis, so she was also like from a convent basically. ठीक है, and then nuns के हाथों she did her English literature and she wanted to be a mom. So मुझे को बहुत similarities नजर आ रही है. And she was also like, you know, very vocal and brave, or people were intimidated by her. I'm just like, they're so similar. Well, that's a compliment. Yeah, if somebody says you're like my mom. Yeah, so I'm getting the same vibe. अच्छा. So हाँ, sorry, पता नहीं. So English literature कर लिया. उसके बाद एग्जाम्स देते ही जॉब की ऑफर आ गई as a creative writer in advertising agency. अच्छा, ठीक है. Started doing that. That's where I met Sadaf. अच्छा. Yeah. And she was my first boss. And वो किया. उसके बाद मार्केटिंग की जॉब्स की ऑफर, बिकॉज छोटी सी तो कम्युनिटी है, तो उन्होंने कहा अच्छा आपने ब्रांड मैनेजमेंट करनी है, तो मैंने ब्रांड मैनेजमेंट कर ली. मैंने आई लॉन्च्ड अ कपल ऑफ इनिशिएटिव लाइक ग्लोरिया जीन्स आई लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, एंड देन यू नो मेट्रो कैश एंड कैरी, 2-4 बड़े बड़े ऐसे असाइनमेंट्स किए. और उसके बाद फिर जब शादी हो गई तो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, मैंने कहा अब मैंने कुछ नहीं करना क्योंकि मैं तो मॉम बनना था. तो अब मैं मॉम बन रही हूँ, तो इट वाज कम्प्लीटली माय डिसीजन. I know that my husband and in-laws were very happy with it. But it was your decision. But it was my decision. Yeah, and that's how because it should be. I did not want to miss out. ठीक है. Even a moment. हाँ, बहुत because यही तो करना था ना. तो वो जब हुआ तो आई थिंक रानिया अभी 2 साल की थी, तो आई जस्ट स्टार्ट डूइंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स हियर एंड देयर. एंड सदफ हैड स्टार्टेड डूइंग सिटी सेल्स उस वक्त. Okay. And it was just like an online journal where she would, because she was also expecting when I was expecting. And she just started documenting things and this and that. And then when I had my son, so Sadaf said, listen, now I'm moving to a very big company. She was working for a big beverage, Coca-Cola, if I can say it. And she said, I won't have time and I can't trust anyone with this. And you have to do it. So जैसे अब्बू ने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर कर लो, तो सदफ ने कहा कि ये कर लो. तो यू नो टिल दैट टाइम आई वाज डूइंग थिंग्स दैट एवरीबडी वाज टेलिंग मी टू डू. या पढ़ाई में, नौकरी में, यहाँ पे नौकरी कर लो, अच्छा कर ली, अब ये कर. तो सिटी सेल्स भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि सदफ ने कहा नहीं, मैं नहीं किसी और को दे सकती. यू हैव टू टेक दिस बेबी फ्रॉम मी. It was like a blog. It was a blog. It was very personal, and we had just started getting some commercial queries from, you know, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी नहीं था. No, there was even Sunday niche. They didn't have their Instagram. We were probably the first people on Instagram. I think हम थे, और wardrobe affair अंबर थी, और एक उमेर है इन कराची, I think वो था. So it was 3-4 people. Yeah.
So that was the time when you used to say I'm a blogger and people say, what is that? Yeah. And from that time to now I say I'm a blogger and say you are also a blogger. So that has been quite a long journey. You know? I know, yeah. So बस सिटी सेज हुआ और बहुत साल मैंने सिटी सेज किया. और फिर मुझे लगा at one point कि okay I'm doing I've always done everything that everybody's what do I want to do. Okay. और ये भी ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा है मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं. And how old were your kids at this point? अभी 2 साल पहले. अच्छा आप अभी recent time की बात करिए. वो इतना सिटी सेज वाला जर्नी तो था. और I started actually doing therapy in 2018. Okay. I went into therapy. I had severe anxiety. Severe. I had a lot of confusion. I was not very healthy as well. So I started doing 2 things. I started working out and then I started doing counseling at the same time. 5 साल हो गए. और वो करते 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 3 साल जब मेरे थेरेपिस्ट ने मुझसे बहुत सोल सर्चिंग माइंड सर्चिंग सवाल पूछने शुरू किए एंड विद टाइम आई रियलाइज्ड कि मैंने तो अपने लिए अपनी मर्जी से कभी कुछ किया ही नहीं. I've always done what people said, this is what you should do, this is what so through therapy this awareness came you. From there. Yes. And then I thought like, what do I want to do? And I had always done small courses around the world cooking and I used to love it. मतलब बस शौक में इटली गए एक हफ्ता स्कूल कर लिया, थाईलैंड गए एक हफ्ता culinary स्कूल कर लिया. मैंने कहा अब मुझे पक्का करना है. This was 2010. And I was supposed to go to Italy back to the culinary school in summer, but 2010 में COVID हो गया. 2020. Sorry, 2020. I'm sorry. 2020 में 2010 में तो शादी हुई थी. Another life changing. 2020 में COVID हो गया. So then I couldn't go, but then I thought still I'm not gonna not do it. Okay. So 2021 में I did SCAFA from here. Yeah. So I went there. I did my chef course. उसके बाद मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया सिवाय दावतें बनाने के और लोगों को खाने खिलाने के. बट दैट्स माई हैप्पी प्लेस. Yeah, that's fine. That's completely okay. I love that actually because वही बात है ना कि हम लोगों ने जनरली लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इतना सर पे सवाल लिया है और करियर्स को और कैपिटलिज्म को और रैट रेस को और कॉर्पोरेट स्लेवरी को एंड हसल कल्चर कि I mean this is how it should be. People ask me तुम शेफ बनी हो अपने दोस्तों और घर वालों को खाना खिलाने के लिए. मैं कहा हाँ कैफे और रेस्टोरेंट के लिए. मैं इतना काम कौन करेगा. मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है इतना काम करना. ना मेरी ज़िंदगी का एम है कि भाई लोग कहें वाह वाह आमना का and that should be totally okay. Yes. मेरी ज़िंदगी का एम है for yourself. Yes. Yeah. I want to enjoy everything. I want to wake up in the mornings, send my kids to school. I want to go do my workout. I want to come. I want to also have time to waste. I don't want to be अब ये करना है वो करना है इसको मैनेज करना है उसको मैनेज करना है ये करना है वो करना है. मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन ही कर लेती हूँ. बड़ी बात. No, I love that. I have no. मैं बल्कि किसी को कहती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का कोई शौक नहीं है. मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का भी कोई शौक नहीं. मेरे कोई बड़े बड़े शौक भी नहीं है. ना मुझे कपड़े ना ब्रांड्स ना बहुत ज्वेलरी. मुझे सिर्फ ट्रैवलिंग का शौक है और वो अल्लाह का शुक्र है हो जाता है पूरा. सो बस उसके अलावा हस्बैंड है कमा रहा है काम कर रहा है. दोनों को करने की क्या जरूरत है इतना सारा. You want to live lead a because happy of him I simple have life. the luxury to also say. A lot of people don't have the luxury to say कि I don't want to work a lot. I have that luxury or I make use of it. Yeah, and that's good because see luxury तो हाँ है ठीक है. You have that privilege, you have that luxury that you're able to make this choice for yourself. And I agree that some people are not able to make that choice for themselves. And then obviously थोड़ा वो ये भी factor होता है कि at what age you are in या आप लाइफ में किस जगह. if you're struggling settling couple तो दोनों को काम करना पड़ रहा है या जो भी करना पड़ रहा है. सेटल हो रहे हो यंग पेरेंट्स जो भी है राइट. आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं आप सेटल हो जाते हो मिडिल एज में आते हो तो यू आर मच मोर you don't have to worry about a lot of things. I guess. I mean there are obviously problems but in that sense, right? I would not give this advice to a 20-year-old starting up कि भाई काम नहीं करना जरूरी है आराम से बैलेंस नहीं. वो टाइम है काम करने का. And in my 20s, I did hustle. I did work. I did 2 jobs when I had to. I used to work in an advertising agency, which is like
16 hours of work. I used to work as a fashion stylist. आप पूरा दिन फिल्म के सेट पे बैठे रहते हैं. कोक स्टूडियो मैंने किया था. मेरा ख्याल है मैं पूरा महीना कोई गिन के बता सकती हूँ मैं कितने घंटे सोई थी. बट दैट वॉज द टाइम टू हसल. दैट वॉज द टाइम टू डू दैट. इफ यू हैव दैट कमिटमेंट देन यू फुलफिल इट. अब मैं वो कमिटमेंट्स ही नहीं करती जो कि मुझे लगे कि यू नो आई डोंट वांट टू वर्क सो मच. सो हर चीज़ का एक फेज होता है. यू नो यू हैव टू इवॉल्व. यू कांट बी कि अच्छा मैं 20 साल का हो गया हूँ, मैंने अब मास्टर्स कर लिया, बहुत काम कर लिया. नो, that is the time when you have to make sense. And when I did all that, when I achieved all the चीज़ें जो कि मैंने प्लान नहीं की थी मगर हो गई, मैं कहा ठीक है अब मुझे सुकून करना है. हाँ, और मुझे बस यही होता है कि लाइक मैं वही बात की थी, कुछ लोगों का लग्जरी कुछ लोगों का नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने we're sort of making everybody feel like they need to be doing more, which is wrong. Exactly. If somebody doesn't need to, because at this point even people who have the luxury and privilege to relax are not doing that. Right? कोई रेस है. It's a race. मैं सुबह 9 बजे ऑफिस गया और रात को 10 बजे आया. क्यों? रेस है, कंपटीशन है. काम खत्म नहीं होता आपसे टाइम पे. क्यों? You know? या डॉक्टर्स हो तो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है ना, उनका काम है ऐसा. You know? That's different. But if you're working in a corporation and you're just trying to be there just for eyeballs, I mean, क्या जरूरत है? So I feel like I think वो कल्चर भी हो गया ना. कल्चर हो गया कि सोसाइटी में कैपिटलिज्म और रैट रेस ने इतना पकड़ लिया है लोगों को कि बस वो लोग वही करें. That's all they're doing, working and being productive, and then they want more and more and more and more and more, right? And it's a competition. It's a competition. It's endless. और उसी में they're trying to find के their happiness also and their balance also, but ऐसे थोड़ी होता है. I mean, I'll tell you something. अभी weekend पे next weekend I have plans with the family and कोई आ गया काम ना. Somebody wanted me to do a video in that weekend only, and then I really had to analyze. I said, is this money worth these 3 days that I'm going to have with the kids and the husband? Kids तो खैर मेरे पास ही होते हैं, but you know, just the 4 of us, nobody else away. और मुझे लगा कि मे बी यू नो कि आई कैन से नो टू दिस. पैसे सबको चाहिए होते हैं. ये कहना कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, वो नहीं है बात. बट हाँ, शायद इतनी ज़रूरत नहीं है कि आई कैन मेक दीज चॉइसेस. बट कभी कभी आप ये भी सोचते हैं ना कि किस लिए ज़रूरत है. इसीलिए टू मेक अ बेटर लाइफ, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट यू डू टू मेक अ बेटर लाइफ. दैट इज द पॉइंट. आपने बहुत अच्छा जब आपने ये बताया ना कि आपको ये ऑप्शन मिली कि शुड यू डू दिस वीडियो, शुड यू टेक द मनी, बट यू हैव दिस अदर अपॉर्चुनिटी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, सो यू कैन हैव. The point is that at one point you do have enough. ठीक है, and now people don't understand, and I think a lot of us struggle with this. Even I struggle with this at many times कि अच्छा मेरे पास अब enough है, do I need to take on more at this moment? Right? But वो यही होता है क्योंकि rat race है तो वो never ending है. मैं आगे निकल जाऊँ, ज़्यादा बेहतर गाड़ी आ जाएगी. हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी है and it should be good enough. तो maybe you don't have to take this every opportunity. Sometimes वही बात है कि enough तो आप ही decide करते हैं ना. What is enough for you? Exactly. For me, honestly, 1 pair of jeans and 4 t-shirts are also enough. मुझे ज्यादा कपड़े रखने पड़ते हैं इसलिए बिकॉज पता नहीं क्या मजबूरी है, मुझे नहीं समझ आती. आमना, आपने भी एक लाइन बोली कि आप ही डिफाइन करते हो ना व्हाट्स इनफ, बट यू नो व्हाट पीपल आर डूइंग. मुझे इसमें बहुत विजडम नजर आया क्योंकि पीपल आर लेटिंग अदर पीपल डिफाइन व्हाट्स इनफ फॉर यू, एंड दैट्स सोशल मीडिया फॉर यू. दैट इज वेयर यू सी या मेरे फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे लाइक्स क्यों कम है, मेरा ये क्यों है, मेरा वो क्यों है. इट्स द कंपैरिजन, इट्स द सो वो आई थिंक मैंने बड़े आराम से, तो खैर आई वुडंट से बड़े आराम से, बट आई थिंक आई हैव रीच दैट पॉइंट जहाँ पे अब मुझे समझ आ गई कि यार मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या काफ़ी है, और बस ठीक है ये. हाँ. सिटी सेस अभी भी चल रहा है. सिटी सेस चल रहा है. सिटी सेस सिर्फ एक बात पे चल रहा है. किस बात पे? अच्छे ताल्लुकात पे. हाँ. I mean, of course, it's a very old platform. हाँ. It's obviously not as popular as it used to be. But I it's think okay. Everything kind of runs its course. हाँ. But और हमें कोई वही बात है ना कि we feel whatever we're getting from there financially, we feel it's enough. कोई हमें उसमें से जायदादें नहीं बनानी या कोई काम आता है हम कर सकते हैं, हम कर लेते हैं, नहीं आता नहीं समझ आता कोई काम, कोई ऐसी इंडोर्समेंट जो नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज़,
मना कर देते हैं. बट आई थिंक बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं हमारे सिटी सेस के, और वो महीने के लिए बीच में बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशू. और इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैं बता नहीं सकती. मुझे लगता है मुझे जिंदगी में इतने लोगों ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके. सो वी हैव दिस रियली लॉयल फॉलोइंग, काइंड ऑफ अ कल्ट फॉलोइंग. we're not in the race of you know Sunday Times इतना हो गया तो नीश उतना हो गया. we're not in the, हम अपने मस्त मलंग में चल रहे हैं. Yeah, and Sadaf is doing that with you? Sadaf is now in London. So unfortunately she doesn't have so much time. But कभी कभी ये होता है कि मैं कोई rant करना हो तो वो सुन लेती है. And you guys are like best friends also. तो हमारा कोई वो मसला ही नहीं है कि you know क्या वो, she's like given me the baby. And she's never said कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों. No, she's been so, I mean, creating something and then just giving it to someone and then just letting them have the control. Trusting them completely. It's amazing. So hopefully I have not let her trust down also. I tell her everything. And मुझे पता है सुन नहीं रही, मगर मैं उसको बता रही हूँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, because I have to. And she's like हाँ ठीक है तुम कर लो. So but City says is एक उस पे अपने चल रहा है tangent पे. ठीक है. So because growing up, becoming a mother was such an important thing to you. You had a strong maternal inclination, right? बहुत ज़्यादा. So I want to talk to you about that. You wanted to be that, you became that, right? How was motherhood for you then? What are your thoughts and feelings सबसे around मुश्किल it? चीज़ है, सबसे मुश्किल चीज़ है. बिकॉज यार आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर, हर चीज़ बाहर निकल के फिर रही है आपके. आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ सोचेंगे, क्या क्या सोचेंगे, किस किस चीज़ से बचाएंगे, क्या क्या करेंगे आप. And honestly, when I had my daughter, it was 2011 and then son in 2015. पिछले 10 साल में दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी ज़्यादा कि मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे पहले पता होता कि ये ऐसी दुनिया होगी तो क्या मैं चाहती कि मेरे बच्चे आएँ इस पे. I loved them so much that maybe I would say कि तुम लोग मत ही आओ, you know. So मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है. मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा. स्कूल में कुछ हो गया अब ये, और मैं तो हर चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना कि अच्छा ये हुआ है तो अब ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, इसने ये बोला है तो इसका क्या मतलब होगा, ये 20 साल बाद क्या सोचेगी. सो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. बट मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर चीज़ भी कोई नहीं है. आई मीन it changes you in ways that it builds something in you that you did not know you had. For sure. Oof. Yeah, that I understand. वर्ड कोई पूछे ना, जैसे आपने पूछा मदरहुड, आप नहीं वर्ड्स में भी आपको पता है. Yeah, there are आप बयान ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप नहीं समझा सकते जब तक कोई बन ना जाए. और जब बन जाए तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. And that change it brings in you ना, जो आपने चेंज की बात की, वो भी एक बहुत अनफेमिलियर चीज़ होती है फॉर अ मदर. Of course. Of an unexplored side of her which is born. Of course it's born. Yes. And you're just like okay, wow. जो आपको शुरू में समझ नहीं आती, आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस सा होता है. You don't know how to understand this new version of you. But when you accept and understand it, it empowers you in a whole new way. I think बहुत नफीस हो गई मैं after becoming a mother. I'd use that word, nafis. Not just for my kids, but just the amount of empathy and amount of understanding I've gained into other people by raising two people. वो नहीं आ सकती वैसे. When you raise a human being, you know, I think humanity आपके अंदर जो तब आती है ना, और जो humbleness तब आती है, अगर वो नहीं आई है ना तो फिर आपने बहुत बड़ी चीज़ ज़ाया कर दिया. So I think the humanity that was, मैं kind of from a very angry person to a very calm person. Motherhood played a role. It played a role. Therapy and motherhood. Yeah. So were you able to, with the help of therapy or you know with motherhood, you were able to understand why you were like that, and how did you then achieve? Why I was angry. I had a lot of angst because I think I was the youngest daughter in a household of 3 daughters, and I grew up hearing people ask my mother कि बेटा नहीं है, आपका बेटा नहीं है, and always feeling it's my fault. My mother would obviously never say anything. या मेरे घर में कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी. बट जब भी कोई, और हर जगह हम जाते थे ना, मेरी अम्मी से लोग पूछते 3 बेटियां, बेटा नहीं है, तो मुझे हमेशा लगता था मेरा कसूर है.
एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग इट इन माई हेड कि शायद मैं जब पैदा हुई होंगी ये मुझे बताते नहीं, मे बी दे वर डिसअपॉइंटेड. खुशी तो किसी को नहीं हुई होगी कि फिर भी लेट लड़की होगी, यू नो. सो आई ग्रू अप विद दैट फीलिंग एंड दैट started making me angry, resentful, थोड़ा अपने ऊपर भी गुस्सा कि मैं क्यों नहीं हूँ लड़का. आई रिमेंबर माई मदर सेज कि एक दफ़ा मैं छोटी थी और मैं बहुत रो रही थी, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ. एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसी बात कर रही है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई यू नो शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग एंड शी इज़ नॉट एबल टू. बट वो ही था कि बस कि मेरी अम्मी से सब पूछते हैं कि बेटा नहीं है, तो वो मुझे गिल्टी फील होता था. सो आई थिंक आई बिकेम एंग्री बिकॉज ऑफ दैट एंड आई ग्रू अप. और ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स वर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे ये प्रॉब्लम, राइट. तो वो अनचेक्ड चला गया. और फिर टीन एज में तो हार्मोन्स ही होते हैं आपके. वो बढ़ते 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 आई वॉज अ वेरी एंग्री पर्सन. नॉट कि मैं लड़ाइयाँ करके लोगों को मारती थी, बट मुझे फील होता था कि मैं गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, यू नो. एंड आई थिंक शादी के बाद ऑब्वियसली जब आप एक नए घर में चले जाते हैं, आप नहीं कर सकते कुछ, नहीं कर सकते बिल्कुल. यू नो, माई ससुराल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सॉरी, माई ससुराल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली. अच्छा, तो वहाँ पे जाके आप नहीं कर सकते गुस्सा, यू नो. एंड सो फिर मुझे जब ये एंग्जाइटी और यू नो अनएक्सप्रेस्ड और लगता था कि कुछ गड़बड़ है, फिर मुझे लगा कि यार मे बी आई शुड टॉक टू समवन, बिकॉज तब तक वो आ गई हुई थी चीज़ें सोशल मीडिया पे, थेरेपी, मेंटल हेल्थ, ये वो. सो देन आई थॉट कि यार मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा देर थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी या मैं उसको कुछ भी सच बताऊंगी, बट लेट्स ट्राई. आई लक्ड आउट ऑन माई थेरेपिस्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट. It's also a very tricky situation. Yes. But I lucked out with him and 5 years. I haven't missed a session. 5 years. Wow, okay. Yeah. So, and you know, like in the things that you said, matlab you said कि you were able to identify कि बचपन में you felt कि oh maybe everybody was disappointed because I was born a girl. ये self awareness, ये identification therapy के बगैर नहीं आ सकती. मुझे नहीं idea नहीं था. इसी तरह that's why there's so many people who are basically just mindlessly living and they're just continuously reacting to stimuli, having a very hyper elevated kind of a nervous system, getting triggered by every and anything, getting offended, getting upset, getting angry. And you know, मतलब वो और इतनी वो होता है ना कि even to understand कि I should get therapy is the first step towards self awareness. That's also awareness of yourself, ना कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है. Why am I so angry all the time or upset all the time or triggered all the time? Why can't I sleep? Why can't I breathe? Why do I feel like there's something wrong? You know? Or something's like a weight on my chest or my shoulder. बहुत छोटी-छोटी. And luckily we have that support now. You know, अब लोग जा रहे हैं इस तरफ and you know there are more therapists coming up and you know it's a thing now. But yeah, शुरू में मुझे hesitate मैं करती थी लोग किसी को बताने, कहाँ जा रही हूँ, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई थिंक ओनली माई हस्बैंड न्यू, क्या बताएं. अब मुझे हेसिटेट करती थी मैं. बट नाउ आई एम वेरी ओपन अबाउट इट बिकॉज आई थिंक एवरीबडी शुड गो. एवरीबडी, बिकॉज नाउ व्हेन यू डन 5 years in therapy and you see people around you and you can see पैटर्न्स एंड यू कैन सी कि यार क्या, क्योंकि आधे थेरेपिस्ट तो आप खुद ही बन जाते हैं ना, तो यू कैन सी दोज लिटिल थिंग्स एंड यू थिंक कि यार मैं इसको कैसे बताऊँ कि मेरी जान you should go. It's not an insult. लोग यहाँ पे insult की तरह कहते हैं ना, you need a therapist. No, it's not an insult. It's not an insult, yeah. Everybody needs a therapist. Yeah, recently, I won't tell who, but someone I know said to someone else, they were telling me कि मैं फलां बंदे से जाके मिला तो हमारी काफ़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में that person was behaving in a way where I could, जो उसके लिए बहुत normal था, they were normally interacting with me, but I could tell that ये normal नहीं है, कि उसको बहुत anxiety है, उसे बहुत angst है, उसे बहुत मसला है. And he said कि मैंने उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे बोल दिया कि I think you need therapy. क्योंकि ना, and then I said कि मैंने ये कुछ चीज़ें identify की हैं, I was like, ये बोल दिया आपने, like because how can you say this, like you know, it's the best advice anyone will give you. And he said that I'm sorry but I just couldn't help कि मैं इस बंदे को बता दूं कि please do this. Yes, you know, exactly. ये बहुत ज़रूरी है. I also really urge to say to some people कि you know, I think you should maybe try. And वही बात है कि because it's a very hard thing to hear when somebody tells you, it hits you somewhere कि पता नहीं मेरी क्या insecurity ना सके. ये वही बात है कि यार I think you have an eye infection. You should go see an eye doctor.
अच्छा, और किसी के बच्चे के लिए तो आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज व्हेन इट स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड एंड व्हेन यू कैन सी कि यार दिस चाइल्ड माइट नीड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा अटेंशन आउटसाइड द हाउस फ्रॉम अ प्रोफेशनल, उस तो आप कह ही नहीं, सोचे भी ना आप, यू नो. हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन कि वो अनसोलिसिटेड एडवाइस है. इट्स द सेम एज कि कोई यू नो इफ यू फील लाइक समबडी इज ओवरवेट, यू आर सेइंग कि तुम्हें जिम जाना चाहिए, तो दैट्स टेकन एज एन ऑफेंस. यू राइट. मतलब borderline, it's tricky. You can't just say that to someone. You can't. Yeah, you can't. So वो it's मैं बड़ी मजे की मुझे ना किसी ने एक दिन पूछा, because I don't talk, I mean माइक है सामने, ये तो मेरी वीकनेस है, but I don't talk a lot in you know social settings. मैं कहीं गई हूँ ना, I'll be quiet, I'll listen and observe and किसी का आप ज़्यादा बोलती क्यों नहीं है? मैंने कहा बिकॉज यू नो मैंने कहीं सुना था दैट इफ यू कांट से एनीथिंग नाइस डोंट से एनीथिंग एट ऑल. ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनीथिंग नाइस टू से, तो मैं चुप ही रहती हूँ, बिकॉज यू नो अब वो टाइम आ गया कि आपको नहीं पता कि आप क्या किसी को कह देंगे. और तो वो एंड इट्स ऑल्सो ट्रू, बिकॉज मुझे याद है ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू हियर अ लॉट थिंग्स, बल्कि अभी भी मेरी अम्मी, आई हैव वेरी old age started having acne now, you know, after my 40s. I never had it. मैं जब हम घर जाती हूँ ना, मेरी अम्मी कहती है हाय तेरे मुंह में क्यों हो गया है, हाय तो तीसरे चौथे दफ़ा के बाद मैं कहा अम्मी आपको पता है कि अगर कोई मुझे बाहर वाला कहे रिपीटेडली तेरे मुंह में क्यों हो गया, तो मैं तो कहूँ कि भाई तुम क्या मसला है तुम्हारा. मैं कहा आप अपने बच्चे को भी नहीं ऐसे कह सकते बार बार. नहीं कह सकते. इवन इफ यू आर कंसर्न्ड, आई हैव टोल्ड यू वंस, शुड बी इनफ. मेरी अम्मी बेचारी उनको तो समझ ही नहीं है कि ये क्या हुआ है, यू नो, कि है नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते. ट्रू, बिकॉज यू डोंट नो अगले बंदे की क्या स्ट्रगल या क्या माइंड में चल रहा है. तो बेहतर है आप चुप ही रहें. आपको कोई जरूरत नहीं किसी को कहने की कि हाय तुम्हें एक्ने होगी ये क्रीम लगाओ. भाई डॉक्टर है, उसको नजर आ रहा है मुंह पे की हुई है, वो जाके कर लेगा. और आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है हर किसी के साथ. आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कहाँ कौन सी बाउंड्री है और आपने क्या कहना है. बाउंड्री इज द बिगेस्ट कैच वर्ड दीज डेज. बाउंड्री ये सीख लिया होता तो आई थिंक बाउंड्री स्कूल में पढ़ाना चाहिए. स्कूल में पढ़ाना चाहिए बाउंड्री. और माँ बाप बनने से पहले एक टेस्ट भी होना चाहिए माँ बाप का कि आप माँ बाप साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, बिल्कुल आप फिट हैं टू बिकम अ पेरेंट. बहुत सारे लोग और शायद इंक्लूडिंग मी एट दैट टाइम वुड हैव फेल्ड, यू नो. और क्योंकि बहुत साइंस है भाई बच्चा और उसका साइकोलॉजिकल और वो सारा कुछ. एक्चुअली व्हेन यू हैव अ चाइल्ड एंड व्हेन यू रेजिंग अ ह्यूमन, तो बहुत बड़ा शीशा आपके सामने खड़ा हुआ होता है और आपके बहुत सारे वुंड्स और ट्रॉमास और इमोशंस जो हैं वो बाहर आ रहे होते हैं व्हेन यू हैव टू रेज अ चाइल्ड. और वो जो ट्रिगर्स हैं, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर रेजिंग अ चाइल्ड सबसे ज़्यादा तो आप अपने आप को रेज कर रहे होते हो और अनलर्न कर रहे होते हो, बिकॉज आप देखते हो, उसको भी देखते हो और आप अपने आप को भी देखते हो. और आप because you know when you're with a child, you know you have to teach them the right and the wrong, you know you have to role model, and when you're doing that you start seeing all the things that you're doing. Also you start seeing a lot of things that happened to you as a child when you were that old. Yes. My husband thinks कि तुम बहुत democratic हो, तुमने ओपिनियन लेना होता है बच्चों का. रानिया was very little और वो साइकिलिंग नहीं करती थी और अदील उसको रोज़ साइकिल चलानी. एक दिन मैंने उसको बिठाया, मैं कहा मेरी जान, you tell me, we really want you to learn how to ride a bike because it's a life skill, you should know it, you will miss out when you grow up. Tell me Janu, do you want to ride a bike? I said, let me think. No. दिल ने कहा इस तरह कौन करता है बच्चों के साथ, उनको कहते हैं चलाओ साइकिल. मैं कहा नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज मुझे जब कोई बचपन में कहता ना करो ये, तो मैं कहती थी मैं तो अब करा लो मुझसे. हाँ. एंड अगले दिन रानिया came and said I think I will ride the bike. And that's the thing, you give them that space to come towards it themselves, because what happens is जो हम खाने में भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, when you force them, you are essentially what you're doing is that in that very moment you are destroying their relationship with that thing. Of course. The one thing you want them to have a good relationship with. Exactly. And you are forcing it and you are being aggressive about it and you're being mean about it. And then you are taunting them for not doing it. And you are expecting them to have a good relationship with this thing. How can a child who has been force-fed the hell out of food want to have a good relationship with food? Exactly, and that goes with everything. And that's, you know, somebody asked me कि आप कोई parenting advice दें, and I said the
बिगेस्ट पेरेंटिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, सबका अपना है, बट आई थिंक यू नीड टू रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन एज पीपल. यू कांट ट्रीट देम एज ओ ये तो बच्चा है. You have to respect them. They have to know. Even when, you know, my kids were 2 or 3 and when they could hear and understand, I was always very respectful towards them. ये ऐसे कर लें, ये ऐसे मैं उनको पढ़ाती हूँ. Like मैं रानिया को, she's in 7th grade, मैं उसको पढ़ाती हूँ. I love your kids, by the way. I just want to say, mashallah, they're very because, you know, I give them all that respect. मैं कभी कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं करती, सिवाय नहा लो. वो आई थिंक दिस इज अ लाइफ स्किल आई वांट टू इंस्टिल इन देम. अगर आपको बचपन से रोज नहाने की आदत है ना, तो आप नहाएंगे रोज, यू नो. सो वहाँ कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा करती हूँ. बट आई थिंक रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. No, and you can, यही बात है. They're a soul, I think शायद मेरे, हाँ exactly. It's a soul inside them. Soul की कोई उम्र नहीं होती. एंड ये मैं आई थिंक बहुत दफ़ा मैं ये बात अपनी पॉडकास्ट पे कर भी चुकी हूँ कि देखें, आपने कहा कि यू नो कुछ चीज़ें जो हैं यू हैव टू इंस्टिल इन योर चिल्ड्रन. ऑब्वियसली यू आर रेजिंग देम, यू हैव टू टीच देम थिंग्स, राइट? बट द आई टेल यू व्हाट, यू कैन टीच समथिंग with respect, of course, and you can teach something with shame. हाँ बिल्कुल, यही मैं and aggression. That is the thing. It's not कि आपने बच्चों को कुछ सिखाना नहीं है और आप उनको छोड़ रहे हैं कि बेटा make your decisions at 8. No, you will show them the way. You will obviously, you know, help them make that decision which you think is right, but you have to do it in a certain way. You cannot say ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको देखा, उसके मार्क्स देखे, वो देखा कितना पढ़ता है. मैंने एक दफ़ा अपने बेटे को कह दिया, ही इज़ 8 एंड माई डॉटर इज़ 12, तो वो होमवर्क नहीं कर रहा था. ही इज़ अ वेरी स्मार्ट किड बट होमवर्क नहीं करता. मैं कहा आपको को देखा है कितना पढ़ती है? उसने मुझे आगे से कह दिया वो है, मैं हूँ. एंड अदिल कहते हैं ऑफ कोर्स तुम उसको सिखाया. मैं कहा बट दैट्स अ वेरी गुड जवाब. ही इज़ राइट, आई एम रॉन्ग एंड आई अपोलोजाइज्ड. आई सेड आई एम सॉरी ज़करिया, यू आर राइट, बट होमवर्क तो करना है बेटा, आ जाओ हम मिलके करेंगे. हाँ, और यही बात हुई ना कि हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और वही बात है जब when we become parents हमारे मुंह से भी निकलती हैं. बिल्कुल निकलती हैं. और फिर हमें रियलाइजेशन होती है, ब्रेक द साइकिल. उसी वक्त सॉरी मैं तो सॉरी कह के मैं तो मेरा जितना मैं अपने बच्चों को सॉरी कहती हूँ ना, बिकॉज आई फील लाइक दे शुड नो एंड दे शुड नो देयर वैल्यू, दे शुड नो देयर वर्थ. अब मज़े की बात है कि whenever I do a video with ज़करिया, रानिया तो अब बड़ी होगी ना, she says I don't want to be in Instagram, no thanks. ज़करिया को मैं कह देती हूँ अच्छा you know ये ब्रांड की वीडियो कर लो. I pay him. I pay him because he should know that there's no free lunch. You don't give people free stuff. He asks me how much are you getting? I tell him and then he does a percentage and says this is mine. That's lovely. And I give him that money because I don't give it to him. I put it in his account. I tell him this is how much you have now. हाँ, obviously अभी वो छोटा है. You're just collecting that for him. He should know his self-worth ना. हमें तो पता ही नहीं था. मैं तो City Says और अपने भी पेज पे कितने मुफ्ते लोगों को दी थी, कितनी पेमेंट्स छोड़ दी कि यार कौन हम इनसे बार बार पैसे मांगे. नहीं, गलत है. यू हैव टू टेल देम अभी से कि बेटा आपकी राइट तो राइट है और आपकी वर्थ है. आप यहाँ पे लोगों को सिर्फ खुश वो भी करें, वो भी ज़रूरी है, मगर पिक द पीपल ना जिनको आपने खुश करना है. अब आपने किसी ब्रांड को क्यों खुश करना है? हाँ, एग्जैक्टली. दिस इज अ प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन, इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ट्रीट इट एज दैट. एग्जैक्टली. और उसमें जो आपकी वर्थ है, यू वेरी वेल डिजर्व. ही फील्स वेरी रिस्पेक्टेड बाय द वे व्हेन ही गेट्स दैट मनी. व्हेन ही डजंट ही सेज अब कितने हो गए मेरे बैंक में, अब तो मैं PS5 मैंने उनको लेके नहीं दिया हुआ, अब तो मैं PS5 अपने पैसों से ले सकता हूँ. मैं क्या पैसों से तो ले सकते हो, मैं घर तो मेरा है ना बेटा. So you see you have to strike that balance. And I mean off the record, कभी मेरे बच्चों ने मेरे से बदतमीजी नहीं की, कभी नहीं की बदतमीजी. माशाल्लाह. डोंट पुट दिस ऑन कैमरा बिकॉज लोग कहेंगे अपने बच्चों की तारीफ करिए, बट कभी नहीं हुआ कि दे हैव I've said something firmly to them and they've turned around and given me a jawab. Never. She's 12. Because you she's on her period. She's hormonal. She's never turned around and said, no, mama, this is not. Never. हाँ, because Amna, you gave them respect. आंसू आ जाएंगे, मगर and they gave it to you in return. Yes. You can earn respect. You can't demand it. You can't get respect out of your children. बहुत बड़े होके माँ बाप के साथ बच्चों के जो bitter relationships होते हैं ना, mostly are because they've been seeded from the start. Bitterness, मुकाबला, shame करना, you know. So ये this is really, I can tell you कि कभी एक दफ़ा ज़करिया ने मुझे कहा था ठीक है ना करो मेरे से बात. I think 2 minutes I didn't talk to him and he couldn't understand कि ये क्या हो गया दुनिया में.
And he said, I'm sorry, mama. So you see, this is what it does when you give them respect. They respect themselves, yes, they will stand up for themselves eventually, but वो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे. सो मैंने तो बड़े मेंटल नोट्स लिए हैं पेरेंटिंग के. बट आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू stay on the subject of parenting a little bit more. Sure. Okay, because I'm a young mom. Yeah. Most of my audience is young as well. And as a young mom, my challenges with parenting, मतलब अभी तक मैंने कुछ ही experience किए हैं. And you've raised kids much older than mine now. Yeah. So, what do you think has been your greatest challenge in parenting or mothering? गुस्सा कंट्रोल करना कैन बी वन थिंग. कभी कभी आ जाता है, ऑफ कोर्स इंसान है. आई थिंक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है चैलेंजिंग, इट डजंट कम फ्रॉम द किड्स, द चैलेंज कम्स फ्रॉम around us. Okay. I wouldn't say that any of the big challenges that I've faced have come from my kids. Okay. They've come from my surroundings. They've come from, maybe when I was living in a joint family, the pressure that was put on me to be a certain kind of mom, and while I myself, of course, I'm a person and I kind of am new to this and I'm learning. और वो constant चीज़ के ऐसे होती है माएँ या वैसे होती है माएँ, इट कम्स फ्रॉम योर इन लॉज, इट कम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, इट कम्स फ्रॉम योर टेलीविजन, इट कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया. मुझे याद है कि शुरू में हमारा रूल है कि वन ऑफ अस विल स्टे विद द किड्स इफ़ वन ऑफ अस इज़ ट्रैवलिंग फॉर वर्क. और मैं गई हुई थी कोक स्टूडियो करने और महीना मैं वहाँ थी और मुझे इतने लोगों ने कहा ऑनलाइन कि आप बच्चों को छोड़ के चली गई हैं, आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, आप बच्चों को छोड़ के चली गई हैं. एंड वो शेम, वो गिल्ट जो दुनिया आपको देती है, आई थिंक दैट इज़ चैलेंजिंग. बच्चे नहीं चैलेंज करते हैं. बच्चे क्या चैलेंज करेंगे कि खाना नहीं खाया, पढ़ाई नहीं की. ये क्या चैलेंज है? ये चैलेंज थोड़ी है, ये तो डे की हैपनिंग है. चैलेंज इज, आई थिंक पीपल मेक इट हार्ड. और हमारी इंट्रूसिव सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा. सो आई रियली इन द बिगिनिंग विद रानिया व्हेन शी वाज बोर्न, आई रियली मेड नहीं रखनी, एंड पूरा अपने ऊपर ले लिया कि आई रिमेंबर छोटी सी थी, घर पे कोई नहीं होता था और आई हैड टू टेक हर टू द वॉशरूम वन डे विद मी इन माई गोदी बिकॉज मेड नहीं रखनी क्योंकि कोई और पालेगा तुम्हारे बच्चे को. एक ही तो बच्चा है और काम भी कोई नहीं है, तो मेड. दीज वर्ड्स, चैलेंजेस कम फ्रॉम मॉम शेमिंग एंड द आप इंसेन हो जाओ बेशक, लेकिन माँ ऐसी बनना है. नहीं, माँ का ही कसूर है भाई. हर चीज़ में माँ का कसूर है. ये नहीं हुआ माँ का कसूर है, वो नहीं हुआ दूध नहीं पिया माँ का कसूर है, पेट खराब हो गया माँ का कसूर है, मेड रख ली माँ का कसूर है, बच्चा इतना क्यों रो रहा है माँ बच्चा बोल सकता है माँ बेचारी अभी ऑपरेशनों से उठी नहीं है, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों नहीं संभाला जा रहा, दीज थिंग्स. एंड मेरे साथ तो शायद उस तरह नहीं जितना मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है, बिकॉज वंस यू गो थ्रू इट ना, यू बिकम अ लिटिल बिट मोर अवेयर कि किसके साथ क्या हो रहा है. द थिंग्स आई हैव सीन विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स और सम माई कजन्स हैपनिंग, I think the challenges are unnecessary challenges that people through their intrusion. ये काम ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, अब आपके इसमें ये सब ऐड करने की कोई जरूरत नहीं. Physically draining when the kid is small. Yes. Even till आज तक मैं यार मुझे लग रहा है मैंने क्लास 7 दोबारा पढ़ ली पूरी. बिकॉज मुझे दोबारा खुद भी तो पढ़ना पड़ रहा है ना पढ़ाने के लिए. तो वो चैलेंजेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होते. वो इट्स फिजिकली ड्रेनिंग, इट्स इमोशनली. यार आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती. और within a year I stopped working from a career person. I became jobless. I moved into a new house because my daughter was born in the first year of my marriage. I had a new person sleeping in my bed, sharing my bathroom, and then I had a baby. So my life तो changed within the first 1 year so much. And then the pressure, ऐसे होनी चाहिए अम्मा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. And I understand most of it is coming from a good place of love and concern. But it's not needed. It's not needed. I think the challenges of motherhood come from your environment more than from your kids. Concern बड़ा interesting word है. जिसमें मैं कहती हूँ कि concern की जगह ना
कंपैशन हम ऑफर कर लें बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। यू आर सो राइट, दैट इज सो वेल सेड कि कंसर्न ना दें आप कंपैशन अंडरस्टैंडिंग दे दें, आप स्पेस दे दें। बहुत, बट या आई थिंक मदरहुड के चाइल्ड, आई फेस देम अ लॉट विद माय फर्स्ट चाइल्ड एंड दे ऑल केम फ्रॉम, हाँ बच्चा कॉलिक हो सकता है, वो चैलेंज होगा बिकॉज बहुत मुश्किल होता है, बट यू नो वो चीज़ें नहीं होती जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए अफेक्ट करें। सारी ज़िंदगी में फिर आपको याद ये रह जाता है कि यार मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, यू नो व्हेन आई बिकेम अ मदर, इमोशनल सपोर्ट नहीं था या और किसी तरह का। सो आई थिंक पूरी फैमिली को चाहिए। इट्स द मेंटल टॉर्चर जो कि, हाँ इट्स द मेंटल प्रेशर। टॉर्चर भी शायद कोई नहीं कर रहा आपको, मगर प्रेशर डाले। हाँ सही बात है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। हाँ एंड इवन थिंग्स लाइक अच्छा ब्रेस्ट फीड कराया, हाँ कब तक कराया, That is the नहीं कराया, द very- वर्स्ट है वो तो, द वर्स्ट ऑफ इट है। अच्छा दूसरी बात ये है कि यू आर अ वेरी पर्सनल पर्सन, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सनल पर्सन। इवन अभी सोशल मीडिया पे मैं हूँ तो आई शेयर व्हाट 10% ऑफ माई लाइफ। या आई थिंक मोस्ट पीपल डू हाँ। 8 to 10 करे तो लोगों को लग रहा होता है कि आप बस ये सब कुछ 100% ही है, कर रहे हो। हाँ तो वो ये सवाल, अच्छा दूध पिया है? कौन सा? क्या? हाँ what? And then you know the pressure of I couldn't because of some biological reasons, बहुत like, होती हैं I चीज़ें। couldn't do it. तो अब मुझे लगता है मेरे पे प्रेशर इतना था psychologically that I have to breastfeed that I couldn't do it. And if I didn't have that pressure maybe I could have. You know, so आप सोचते नहीं है कि, so I think motherhood के challenges all come from the society, even बड़े होने तक। कपड़े कैसे पहने हुए इसकी बेटी ने, अरे भाई मेरी you know, या इस तरह की चीजें। So I think motherhood and do you think that still continues? forever. Okay. तो शादी भी हो जाती है तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बिल्कुल सही बात है, यही कहते हैं ना। So it's a forever thing. it's a forever thing. हाँ, Forever it is truly a challenge. Yeah. So बीच में you said that you were stylist as well. Yes. हाँ, तो how was that? How did that happen? Again very veteran in that field. In the sense कि अब तो it's a very common हाँ, thing. तब तो नहीं था। हाँ, तो 2-3 ही ये थे। stylist आप कैसे बनी? How was किसी के that कहने पे? experience? Of course. अच्छा मेरा दोस्त है जुनैद खान, अच्छा। वो म्यूजिशियन और एक्टर है। तो उसने तब कुछ ड्रामे श्रामे करने, तो उसने कहा मेरी वार्डरोब कर दो, समझ नहीं आती मुझे। तो वो उस वक्त मैंने उसको वार्डरोब जब शुरू करके दी तो 1-2 दफ़ा अच्छी हुई, तो उसने कहा अच्छा फिर कर दो। फिर वो मेरे कुछ डिज़ाइनर दोस्त है, मुनीब नवाज, ये वो, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स बताने शुरू कर दिए। तो वो भी किसी के कहने पे, मुझे शौक नहीं था कि मैं स्टाइलिस्ट बनूंगी। वो मुझे लगता था कि मेंस स्टाइलिंग बहुत वीक है पाकिस्तान में। मैं एक्चुअली स्टार्टेड एज अ मेंस वेयर स्टाइलिस्ट। गौहर रशीद है जो कि मेरा जूनियर था कॉलेज में, उसने कहा आमना बाजी मेरी भी कर दें स्टाइलिंग, तो बस वहाँ से शुरू हो गया। सो या I enjoyed some projects, I would say that I did. I didn't enjoy it as much because creativity का कोई scope ही नहीं है यहाँ पे। तो अब जाके जैसे यासिर, महक, they do brilliant work, creative stuff, because अब वो मार्केट खुल गया, दिमाग खुल गया है, ठीक है, mature हो गई इंडस्ट्री। थोड़ी बहुत। I was a celebrity stylist, they don't want to do anything obviously. उनके पास room for creative, वो तो बाजू नहीं दिखा सकते, टांगे नहीं दिखा सकते, क्योंकि you know halal brigade is so strong and they so वो I enjoyed a few creative projects a lot that I used to do with good photographers like Ashna, but उसके अलावा कोई खास creativity नहीं थी उसमें। And how then I thought it was underpaid for the amount of work I was doing, so it wasn't worth my time. Because I would feel as a stylist, I think it's a lot of work. It was a lot of work. Yeah. It's not just the shoot, it was pre-shoot, Yeah. post-shoot. कपड़े वापस भी तो करने हैं ना, चीज़ें वापस करनी है, sorting करना. I remember I was styling 3 leading actors for their movies, Sajjal, Mehwish, and who was the third one? तीनों की, Armina. At the same time की फिल्म आ रही थी ईद पे. So I was doing their promotions सबकी, 100-150 looks सबकी. मुझे ख्वाब में पता क्या आता था, मैं रेड कार्पेट पे खड़ी हूँ और ज़करिया मेरे साथ, और मैं कह रही हूँ इसको मैंने स्टाइल करना, मगर ये तो पैम्पर लगाता है। सो मेरे दिमाग में हर वक्त रहता था, मेरा घर वॉज अ फुल स्टूडियो, कपड़े ही कपड़े आ रहे हैं जा रहे हैं। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, एंड most of it was unpaid work when you work with celebrities, and the other was underpaid work. Wasn't worth it. वैसे generally what did you think of,
how did you feel the fashion industry was? I don't fit in the fashion. I don't fit in most places, but fashion में तो I don't fit at all. I also don't fit in the entertainment industry. I'm a very private person. ये मैं बातें कर लेती हूँ मगर वो मुझे कुछ शौक नहीं है कि मैं मिलूँ लोगों से या मैं हैंग आउट करूँ और मैं मुझे 10 बजे सोना होता है भाई. सो आई डिड नॉट फिट. मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं कंफर्टेबल थी डूइंग देयर वर्क, बट otherwise no. I didn't feel like this is my calling or this is me. And generally आपने बोला कि एज अ स्टाइलिस्ट यू फेल कि वो अंडरपेड सा था. मुझे जनरली आई डोंट नो एक्चुअली बिकॉज मेरा फैशन इंडस्ट्री के साथ बहुत ओवरलैप नहीं हुआ. बट डू यू थिंक जनरली इन दैट इंडस्ट्री it's an underpaid yeah it's an underpaid unless you're making bridals then unless you're making bridals but I just feel like वही ना only the designers are making the money. उसका जो trickle down है I think photographers are also now doing better. Models have started asking for more money which is good because the models were underpaid, the stylists were underpaid. But अब I think but you have to be top tier to be asking for your amount. You have to be really top tier. But a few people have really changed the game, like Hashim with his sets and everything. Hashim Ali. Yes, amazing work. Incredible work. Qasim with his makeup, फिर Ashna with his photography. These people have really upped the game. But you have to be very top tier. और आपकी दोस्तियाँ बहुत होनी चाहिए. दोस्ती के बगैर it's a network game. It's a network game and I'm so bad. अच्छा लगता नहीं है वैसे. But I think fashion industry में it's all about network, it's all about connections, who's and who you know. And I'm the least social person. I have 2 friends in the world. I'm the least social person. लोग मुझे कहते हैं ना वहाँ पे तो बुलाया होगा वहाँ पे. मैं कहा मुझे सिर्फ लोग वहाँ बुलाते हैं जहाँ पे उनको काम हो मेरे से. कोई मुझे दोस्तियों की खातिर नहीं बुलाता बिकॉज मेरे दोस्त ही नहीं है. And I don't mind. Yeah, that's how you've chosen to live your life. Yes. I like my क्या कहते हैं home body life. Like and what I'm understanding from everything that I've spoken to you about is that you're very secure in the decision that you take for your life and you've chosen them and you embraced them. I have worked hard on myself. So I have to trust myself now. इतनी मेहनत करके तो अब तो थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया अपने ऊपर. And I have no severe ambitions or severe need to fit in. You don't have to prove yourself to anyone. अब नहीं. ये तो बेस्ट बात है. Maybe sometimes to my kids to prove a point, but that's it. And that's fine. Yeah, to my husband, yes. Him I have to prove every day. नहीं, But no, jokes aside, no. Really. I'm the more. ये तो मैं बहुत तैयार होके आई हूँ आज. ठीक है ना. स्पेशली कि हमना ने बोला पहली पॉडकास्ट है वरना मैं तो बिल्कुल ही झटो मासी. I don't care. You don't care. Yeah. No. For me, clothes are not, or my makeup, or my, they're not. जब आप मुंह खोले ना, that is when, there has to be something there. Substance. इसलिए मैं मुंह कम खोलती हूँ, कम बोलती हूँ. आपके अंदर substance होना ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ होना, कुछ तो होना आपके अंदर. कोई expertise, किसी बात पे आप बात कर सके. I feel उस पे काम करना चाहिए. On your inner self. चाहे आपको एक ही चीज़ के बारे में बात करनी आती हो मगर उस पर अच्छी बात करनी आती है. That's what I feel. You don't have to know everything. अब मुझसे अगर आप पूछें इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता. नहीं इतना थोड़ा बहुत पता है बट मैं बहुत नहीं बोल सकती उस पर. ठीक है ना. या आप मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिचुएशंस का पूछे मुझे उतना नहीं पता. सो मैं कह देती हूँ कि मुझे नहीं पता. बट जो मुझे पता है वो फिर मुझे सही से पता है. हाँ ये अच्छी बात है. अच्छा, in that breath of you being secure, not wanting to prove yourself to anyone, and you're knowing what you want to do and things you want to say or talk about, one thing you mentioned before we started was that you feel strongly about wellness. Yes. Right? And balance in your emotional, mental, physical health. जी. What are your thoughts on that and how did you end up feeling strongly about this? मेरा ख्याल है when I started liking myself and पहले तो मुझे मेरा कोई ओपिनियन नहीं था अपने बारे में खास. I was just floating in the world. When I started saying कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा मुंह है, ये मेरे हाथ हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी सेहत है, ये मेरा दिमाग है, I think I started valuing it.
And I used to be a big Coca-Cola addict. I used to drink like 3 or 4 every day growing up. बचपन से मेरा ख्याल है फीडर में भी अम्मी ने दी थी. So मैंने अपनी ज़िंदगी के 39 years I had so much of that. एक दिन I decided कि मैंने अब नहीं पीनी. That's it. I never. It's been 3 years now. I've never touched it. I think वो conviction आई ही तब जब मुझे लगा कि मेरे लिए मेरी old age और मेरी सेहत. I want to grow old. I want to have my wrinkles and fine lines and grey hair, but I want to be healthy. I don't want to be miserable at any stage in my life, physically or mentally. So I think that took me towards wellness. Liking myself, wanting to be good to myself. अंदर से. So mentally तो obviously through therapy, emotionally भी उसी से आ जाती है. काफ़ी stability, काफ़ी balance. Physical पे you have to work. I'm a food blogger. I have to eat a lot. Yeah. So if I don't have that balance, I will be an unhappy person. So I think for me balance is happiness in every way. And mindfully living your life. I mean, with intention ना. With intention नहीं, मैं ये नहीं कि मैं कहूँगी कि कभी भी बर्गर नहीं खाना. I will. No, and actually absolute mentality is not a good thing. बिल्कुल नहीं, वो balance नहीं है ना. Absolute mentality नहीं होना चाहिए कि भाई कभी खाना ही नहीं है बर्गर या इस तरह. एक balance होना चाहिए. बिल्कुल balance. So इसलिए जब से I started doing meditation and I started doing it, बहुत लगते हैं बड़े fake words लगते हैं. सच्ची बात है, मुझे भी एक टाइम पे लगता था. कोई कहे ना मैं meditation करती हूँ, मैं कहती हूँ. But you know, when you really get into that lifestyle of really looking in, तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं. आपने जब मैंने आपसे पूछा ना कि वेलनेस क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने कहा कि when you started liking yourself, तो मेरी वेलनेस के बारे में exactly same thoughts हैं. So मैंने बोला कहीं पे कि you know it is first when you accept yourself you can change yourself. तो अब किसी को like it's a paradox, right? Why would you change yourself if you accepted yourself, right? Because so मेरे लिए it's that कि see if you don't like yourself, which means that you don't accept yourself the way that you are, you don't like yourself, you will never do good to yourself. It's like if you don't like someone, if you hate something, you don't like it, would you want to be good to it? So will you make good choices for that person? But when you love yourself, no matter who you are, what you look like, you will if you love yourself, you will make good choices for yourself. So if you, for example, if you are overweight, as long as you hate yourself for being overweight, you will never make good choices for yourself. The moment you accept that this is my body and I love my body, जैसा मेरे साथ ये हुआ था कि when I gained weight after my pregnancy, तो मेरा ये था कि I started to have a dislike towards my body. जिसमें फिर I went through this journey of understanding कि you know my body, like I've actually reduced my body to the way that it looks. मैंने ना उसको फिर मुझे understanding हुई कि यार my body helps me walk, breathe, talk, birthed the baby, fed the baby, you know, held the baby, you know, rocked the baby to sleep, stayed up so many nights. My body helped me do that. मैंने पूरा जब मैंने वो I went through that journey with yoga and meditation of accepting my body and loving my body, and yoga helps you do that in the shavasana and you know all the things you can do with your body. बिल्कुल. तो मैंने पहले अपने आप को जब अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया और and I fell in love with my body for what it does for me, not the way that it looks. And मेरा ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि I am not going to go to the gym or eat better so that my body can look a certain way. No, so because I love it. I just didn't want के intention behind जो मेरी wellness होना वो reduce to weight हो the way it looks. Right. But you want to do better for it, you know. Better for it, and you will do better for something that you love. Exactly. Like your kids, you love them. You will make sure you treat them in the best you possible way. You make the best choices for them. Best choices for them, right? So I was like, I need to give myself the love that, और यही था that I give my child. और फिर मैंने कहा जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को, ये तो बाय प्रोडक्ट है फिर ना, और लुकिंग दैट गुड. यस, दैट इट्स अ बाय प्रोडक्ट. So I was like जिस दिन मैं Amna, it's like
मुझे ये चीज़ जब समझ आ गई तो आई वाज लाइक दिस इज गेम चेंजिंग. इससे पहले मैं हज़ारों दफ़ा कोशिश कर चुकी हूँ टू लूज वेट बिकॉज ऑफ द वे दैट आई लुक्ड. बट द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई एक्सेप्ट माई बॉडी एंड लव माई बॉडी द वे दैट इट इज, all of it came easier to me. I found myself going to the gym. I found myself making healthier choices. I found myself, making healthier choices. And then वही बात है ना, जो outcome of it वो देख के भी अच्छा लगता है. Then you're like, okay, yeah, this is a bonus. This is a bonus. Exactly. So I think wellness और ये सब comes first from. और बहुत लोग मुझे कहते हैं loving yourself means being selfish or self-centered. No yaar, the way it opens you up to everything else around you when you are happy with who you are. आपका जो empathy level और आपका जो एक वो मुझे लगता है halo effect जो वो लोगों को लपेटता ना आपके इर्द गिर्द, उसमें you cannot be a selfish person then. Yeah. I think the greater self love you have, the greater love you can extend to others. Exactly. मगर ये बातें लोगों को समझ तभी आएंगी ना. It takes work. It takes work. Yeah. And you पता है क्या, commitment. आपको समझ भी तब आती है कि when you actually start loving yourself and then you find yourself being more loving to others, more compassionate. जो जब आप अपने आप more understanding, more open minded, less judgmental. Exactly. The day you stop judging yourself, the day you start giving yourself forgiveness, giving yourself grace, you find yourself extending it to others much more. बिल्कुल ऐसे ही है. So true. गुदगुदी होगी सुन के. बट वही बात है ना कि पता है क्या आमना, ये बातें हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और they're out there in the public, right? मुश्किल से समझ नहीं आती unless you go through it. Feel करके. And I think अब इतनी ज़्यादा और इतने लोगों ने कर दिए हैं in their कि वो नहीं होता कि एक background noise सा बन गया. Loses its value. हाँ. But I think कि सबको अपने लिए तो कोशिश करनी. अगर आप अपने लिए ही कोशिश नहीं कर रहे तो मुझे बहुत लोग हैं ना कहते हैं कि यार हम क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं एक्सरसाइज करने का. मुझे तो समझ नहीं आती. एक्सरसाइज करने का ये मतलब तो नहीं कि आपने जिम ही जाना है, कपड़े पहनने, जिम जाना है, कुछ करना है. आप कहीं भी कर सकते हैं. आई मीन आई सी यू लिविंग इन दुबई नाउ एंड यू आर स्टिल कमिटेड टू इट एंड यू आर स्टिल डूइंग, इवन इफ यू आर डूइंग इट एट होम, यू आर डूइंग इट राइट. ये क्या बात हुई कि मैं तो बल्कि जब जकरिया छोटा था उसको उठा के ही स्क्वाट्स कर लेती थी कि उसको भी एंटरटेन कुछ भी कर सकते हैं. इट्स रियली अबाउट, and it's not just exercise, yeah. I mean, there's so many layers that you find once you start going into that journey of really taking care of yourself. And self-love is such a complex, complicated discussion, and it has so many layers, but it's magic. It's like magic. You said, it can change you. It can change the world also. If people started liking themselves better, they would project less hate towards others. वो एक बहुत common है haters में कि it's a part of themselves that they hate, that they see in someone else and then they give them the hate. So hate भी कम हो जाएगा. सही बात है. लेकिन हमने जो है वो इसको selfish समझा हुआ है. कोई भी चीज़ हमारी तो लाइफ ही दूसरों के लिए है ना. हम तो बने इसलिए हैं कि हम दूसरों की खिदमत करें और वो भी करें, बट अपने लिए भी तो कुछ. Starts with your charity begins at home. Everything starts with yourself, यार. वरना तो it's just it's all empty. You can't pour from an empty cup वाली बात. मेरी बेटी कहती है, उससे पूछना who loves you the most in the world, तो कहती है me. अच्छा, who's the second? Me. Third, still me. So she है, उसके अंदर अभी से ये है कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ. And you can see it in her personality. She has a personality. माशाल्लाह. 12 साल में मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी पर्सनैलिटी क्या होती है. हाँ, like इतने बड़े होकर, like you said, you were making decisions, like your decisions were essentially being made by other people. Yeah. हाँ, क्योंकि अपनी understanding नहीं थी, अपनी awareness नहीं थी. हाँ. And that's how you've learned that this is how you lived your life, and you're ensuring that she doesn't have to. She doesn't live her life like that. Yeah. That's really nice. That's wonderful. I love talking to people who come on the podcast. I love talking to parents because I see how they're breaking the chains. हमारी generation is very amazing at that. हमारे अम्मी अब्बू की generation सारे almost एक जैसी थी. उन सब की एक जैसी बातें थी और हमारे सबके traumas भी एक जैसे हैं बचपन के. But now there's so many styles of parenting. There's so many because everybody is now really trying their best. Yeah.
And I feel कि हमारी generation of parents really deserve an applause for that. Yeah. Do you think कि जब बच्चों की लाइफ में फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो और उनके पेरेंट्स उनको डिफरेंटली वो कर रहे हैं, is that something that's difficult to navigate, या उसमें like होता है कि आप कभी कभी अपने बच्चे को एक सर्टन तरीके से कर रहे होते हैं एंड देन दे कम एंड से मगर उसने तो ऐसे कहा है कि ऐसे होता है. यू हैव टू ऑलवेज हैव योर ईयर्स ओपन एंड लिसन to what your child is saying, because when he's coming and telling you something कि वो तो ऐसे कह रहा था, he's asking you. He's not just telling you, he's asking you because he's trying to make up his mind. And that is when as a parent you have to kind of like really take that on board and explain what you think. And I think बचपन से और बात यही है कि when you have a set, you cannot be like एक दिन ये एक दिन वो. जब आपका एक है सेट कि यार हमारे वैल्यूज़ ये हैं या हमारे तौर तरीके यहाँ ये हैं, वो जब आप उसको रिपीट करते हैं तो माइंड लर्न्स व्हाट थ्रू रेपिटेशन, राइट. आप जब पहाड़ा याद करते हैं 2 का तो आप रिपीट कर करके करते हैं ना, माइंड लर्न्स थ्रू. सो यू हैव टू कीप इंस्टिलिंग. इट्स नॉट लाइक एक दफ़ा बता दिया ना हम ये करते हैं, ऐसे नहीं होता. आपको हर स्टेप पे हर तरीके से हर सिचुएशन के साथ लेके अपने जो भी वैल्यूज़ आप इंस्टिल करना चाहते हैं या जो भी बिलीव्स इंस्टिल करना चाहते हैं आपको वो करने हैं, बार बार करने हैं. आप ये नहीं कर सकते. आएंगे उनके ज़िंदगी में दोस्तों के अलावा उनके मियाँ बीवी भी आएंगे जो कि बहुत फ़र्क सेट ऑफ थॉट्स के साथ आ सकते हैं. बिल्कुल ठीक है ना. तो हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपको लगें कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो उस बच्चे के अंदर है तो आप उसको अडेप्ट भी कर सकते हैं. अडेप्ट करें, इनकरेज करें, बिल्कुल करें. और जहाँ आपको लगे कि ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपने कहना खबरदार उसको कहीं ना मिले. उसका तरीका ये कि आप कहें बेटा हम ऐसे, एंड दैट्स आई थिंक वही बात है. कॉन्वर्सेशन, बात करनी है आपने, डांटना नहीं है, शेम नहीं करना, ये नहीं कहना हाँ आप पीछे से नंबर डिलीट कर दें उसकी माँ का फ़ौरन अपने और कहें मेरे पास तो नंबर ही नहीं बेटा, प्ले डेट पे नहीं जा सकते. बट यू हैव टू काइंड ऑफ like tell them why. If I ever tell Zakaria that maybe you should not play so much with this person, I give him a reason. It's never like मैंने कह दिया. And then he understands. It has to make sense to him. He understands. You're right. Maybe you're right. Yeah. Okay. So I have 2 questions before we wrap this up. ठीक है. You talked about wellness and how you've worked for your own wellness. Yeah. So what are some of the ways that you've explored wellness for yourself? क्या क्या किया आपने? थेरेपी तो आपने ली. ठीक है. मैंने फिजिकल एक्टिविटी, okay, ठीक है ना, whether it's gym or walk or anything that keeps my endorphins. It's a very positive thing to have. That energy in you that comes after physical activity. So any kind of physical activity. So I've done from CrossFit to Pilates to running, long distance, everything. ठीक है ना. then you find what you love the most. योगा भी किया मैंने. So इतना सारा कुछ करने के बाद now I know that okay, Pilates is something that I love doing, right? And it makes me happy. डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर. अगर मैंने सोच लिया ना कि ये करना है तो चाहे मेरा मूड नहीं है, चाहे मुझे कुछ, unless I'm physically ill, I'll do it. I'll show up. If I've said I'm going to do this, I don't listen to okay, मोटिवेशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. नहीं, मैं कहती हूँ करना है, उठो करना है. डिसिप्लिन बहुत है मेरे अंदर और वो भी अब आया. ठीक है ना. बिकॉज रेपिटेशन that's how you discipline your mind. So motivation is not important, discipline is important. उसके अलावा I have really done a lot of different kind of Ayurvedic practices. I have also been a vegetarian, not for a very long time, but 3 months. I have given up meat. Now I've like fixed my time of eating कि मैंने इतने बजे खा लेना है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाना. और ये सारा कुछ एकदम से नहीं होता. छोटी छोटी चेंजेस, हिट एंड ट्रायल, ये सूट कर गया, वो है ना. हाँ, ये मुझे सूट कर गया, वो सूट नहीं किया, ये वो. सो नाउ आई एम एट दैट पॉइंट वेयर आई नो कि मैंने अब ये इस वक्त गोश्त खा लिया ना, अभी मुझे रात को हजम नहीं होना. सो आई विल नेक्स्ट टाइम नॉट डू इट. कभी कभी होता है बिकॉज सोशल कमिटमेंट है, कोई कहीं किसी दावत पे गए हुए हैं, लेट खा लिया, बट मुझे पता होता है कि अब काम ख़राब है. सो फूड इज़ अ बिग थिंग. आई थिंक गट हेल्थ इज़ very important. I think it affects all aspects of your life. Everything is connected to your
gut, sorry. Everything is connected to your gut. So I really take care of my gut health. Every few months I'll do a no sugar challenge. 2 हफ्ते चीनी छोड़ दी, 1 हफ्ता गोश्त छोड़ दिया, gluten बीच में छोड़ दिया. So I keep doing these things to keep my body, and my mind in shock, in practice, and you have to challenge it to kind of like for it to do better. Yeah. Oh, that's nice. And you recently did hypnosis therapy. I went for hypnosis. That was a group hypnosis session. I couldn't get hypnotized in that session because of the surrounding noise. My conscious mind is quite, but when I do घर पे my guided meditations, मैं सो सकती हूँ. Okay. Through it, मैं रात को करती हूँ. मैं तो अब बल्कि नई चीज़ शुरू किया, walking meditation, guided walking meditation. आप पार्क में walk करें and you're actually in a state of meditation. It's not like you're bumping into things, but your mind, meditation means it's relaxing your mind, right? It's letting go. It's absorbing everything that's around you. So I think I'm going to do a one-on-one hypnosis session. Yeah. And hopefully in that I will conk out. Yeah. And get into your unconscious So I like mind. to try these things. I like to try new things. Okay. I'm also going to Sri Lanka for 10 days for a complete Ayurveda retreat. Lovely. So 10 days is going to be like, I told my son and he said, I want to come. I said, there's no meat, no sugar, no gluten, no caffeine. Kehta, are you going to jail? Cute. Okay, something like that maybe. But very restrictive. Morning yoga, evening yoga, sound therapy, treatment. So I'm going for that for 10 days. और अल्लाह का करना ऐसा है कि ये वक्त ही ऐसा बन गया. I had planned this 2 months ago. But दुनिया के हालात ही ऐसे हो गए कि अब तो मुझे बहुत चाहिए कि मैं जाऊँ और ये मैं करूँ. So I keep trying to do these things. Okay, and my other question was कि food blogging. हाँ, ये क्यों आपने decide किया that this is something you Because chef बन गई, लगा के अब मुझे तो बड़ा पता लग गया खाने का. Then I did this out of the blue. I got a call from, I don't know if you know, YouTube पे ही है Best Ever Food Review Show with Sony. He called me and he said कि we're coming to Pakistan, do you want to host with us? And I did that one episode with him. और मुझे जो feedback मिला उस पे कि it was a review show and people were saying कि the first person we've seen who's at par with Sony, or I was funny and I was enjoying it, और camera और mic तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. तो I think उसके बाद it took me, वो मैंने 2021 में किया और 1 साल मैंने नहीं किया food blogging. But then I said यार अब मुझे हर कोई कहता है you were so good तो मैं यही कर लेती हूँ, चलो food blogging. And you really went through with it, like you're doing it. I'm doing it. Yeah. अब तो मैं आजकल जरा I've slowed down because of I don't feel like it because and I'm giving myself that space. But yeah, I'm doing it and I think I'm doing it all right. And do you enjoy it? I do. Food is my love. Yeah. I love food. Yeah. And I do enjoy it because honestly लोग बहुत खुश होते हैं. And you're getting a good feedback on it makes people happy, और मैं जब वो खुशी, वो मुझे ये नहीं कि मैं बहुत कोई साधु इंसानों के लोगों को खुश करके मुझे खुशी मिलती है, बट वो मेरे पास जब एक्साइटेड होके आते ना कि यार हम वहाँ गए और हमने खाया और बहुत अच्छा था, बुरा भी लगता है कुछ लोगों को, एंड यू जस्ट फील लाइक अच्छा चलो कुछ तो अच्छा हुआ. वरना मैंने ट्रांजिशन, मुझसे तो वैसे ही फैशन नहीं होता, तो ब्लॉगर और क्या करेगा. ट्रांजिशन तो मैं कर ही नहीं सकती. सो ना मेरे में कोई गाने का टैलेंट है, ना मेकअप करना आता है, लेकिन खाने का अच्छी तरह पता है. फूड आई नो, दैट इज समथिंग आई नो, सो आई वाज श्योर ऑफ इट. And did you enjoy your learning at SCAFA? Of course. Oh, so much. कैसा है उनका प्रोग्राम? I liked it. I think for थोड़ा सा मुझे लगा कि they can do more, but वो उस वक्त थोड़े understaffed थे. I think once they have more, because COVID के बाद a lot of their instructors went back. They were all foreign instructors. तो वो they're still struggling because थोड़े understaffed थे. But what a lovely man Chef Rob is. He's the main instructor. मेरा मतलब इतना अच्छा आदमी नहीं देखा मैंने. He वो पैदा हुआ है टीचर बनने के लिए. So I had a great time. I never knew कि मुझे बकरा काट के और अंदर से आंतड़ियाँ निकाल के भी इतना मजा आएगा, बल्कि in the middle I said maybe I want to become a butcher. Yeah, because you enjoyed the learning process so much. And then I read a lot about
how food works, because science है भाई. So I didn't enjoy baking so much because I felt that was more mechanical. Okay. Recipe इतनी इससे ये हो गया तो गड़बड़ है. Cooking is more creative. हाँ, it gives you more room for creativity. More room, yes. So I enjoyed it a lot. Okay, any other thoughts, Amna, that you want to share on the podcast? You're doing such a fabulous job. Thank you. You know, anybody who is trying to educate people in any way, I think it's so important. मैं भी entertain ही कर रही हूँ through food और बाकी transition videos कर रहे हैं और you know whatever everybody is doing, they're working hard. But I think if you take it on yourself to have conversations with people not for views, but के 4 लोग भी सुने तो they learn something, I think that is remarkable in this climate. Thank you so Where much. everybody just says 3 million view हो गए, clickbait हो गया, ये हो गया. I think it's a very good thing you're doing. Thank you so much. हाँ, बस दुआ करें, करती रहूँ. नहीं ये करते रहना है, because 2 लोग भी सुन के किसी चीज से फायदा उठाएंगे ना, that's the universe is going to bless you. Thank you so much. Yes. That's so sweet. I feel so happy. Keep doing to it. hear this. हाँ. No, it's I actually feel like that. Yeah. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. I know कि This is my first podcast. Yay. And you were so good and मुझे बहुत मजा आया. I feel like genuinely I connected with you. Yes, I'm like your mom. So much to learn from you. And I told you कि मेरी guest list क्या है. So like I like talking to all kinds of different people. Yeah, that's a very good mix. Yeah. And they're all लड़के नहीं है मगर कोई है. No, because my podcast is it's only women. It's only women podcast. ये तो maybe boys can also teach women something. No, they can for sure. I do think so. But उसका ये था कि I feel like generally in a lot of industries or spaces, men are getting that. They already have a voice. They have a voice. Yeah. और जब आपके पास option हो जाती है ना, तो because they're obviously they've always had a क्या उसे कहते हैं, they've always been ahead क्योंकि उनको हमेशा वो privilege मिली थी. So when you have to choose between 2 people, you're just like वो ज़्यादा बड़ी position पे है या बेहतर space में, right? So then you need to carve out that space for women, at least for now. और women को ये भी तो कोई सिखा देना कि women के साथ अच्छे रहते हैं. women ही women के साथ जो है वो. ये तो recurrent theme होती है मेरी podcast में, जब लड़कियाँ आती हैं वो कहती हैं वो जैसी कहती हैं, and the sad part was जिसमें समझ आता है वो कहने लगी हैं कि मेरे साथ औरतों ने ये किया. The most hate I get is from women. Yes. 100 में से 1-2 बंदे होंगे जो आके कोई बदतमीजी करते होंगे, मगर बाकी सब औरतें हैं. तो मेरे साथ भी यही होता है. It's always the woman. Yeah. And that's the sad part. So it's a cycle. It's a really bad cycle, and hopefully the next generation will break it. Because I see the younger girls and I see they do support each other, and I see my daughter and I hope they will break it. They are much more secure in themselves. Yeah, so they don't have to pull another They don't girl have to down. pull another one down to look like a queen. Yeah, you know? Yeah. वो सारी queens हैं. और बड़ी अच्छी, मैंने उस दिन एक you don't have to put this बेशक, but जावेद अख्तर का मैं एक सुन रही थी क्लिप, and he said कि जब मुर्गी होती है ना ब्रॉयलर, तो जब चूज़ा बनता है ना तो आप उसको एक डब्बे में डाल देते हैं, उसको आप खाना खिलाते हैं. वो बड़ी होती है आप अगले डब्बे में डालते हैं, खाना खिलाते हैं. फिर बड़ी होती है उसको अगले डब्बे में डाल देते हैं. तो जब तक वो फुल ग्रोन होती है ना तो उसने कभी मूवमेंट ही नहीं की. तो जब आप उसको पकाते हैं उसमें हड्डी नहीं होती, क्योंकि वो कभी मूव ही नहीं की. उसको आपने डब्बे में डाला, खाना खिलाया, फिर उससे बड़े डब्बे में डाल दिया, फ्रॉम वन डब्बा टू दिस इज व्हाट यू डू टू योर डॉटर्स. आप उनको डब्बों में और रिस्ट्रिक्टिव, और आप यू नेवर लेट देम ग्रो, यू नेवर लेट देम बिकम एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट हैव अ स्पाइन, एंड व्हेन दे डोंट हैव वन दे विल नॉट लेट यू हैव वन, बिकॉज हेटर्स विल ऑलवेज सी what they don't like about themselves or what they're missing, they're going to project it on you. And वो ये होता है ना कि लड़कियां फिर जब वो देखती हैं जो वो करना चाहती थी कोई और कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं होता. जबकि उसकी क्या गलती है कि यार इसका मियाँ इसको क्यों करने देता है, इसके बाल ऐसे क्यों हैं, इसको पीआर, मैं पता है पीआर लेनी छोड़ दी. मुझे अच्छा ही नहीं लगता. एक तो डब्बे खोलना वैसे मुझे सस्ता काम लगता है थोड़ा सा, बट दूसरा ये कि मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि मुझे इसने ये भेजा, मुझे उसने वो भेजा, बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों को महसूस होता है कि यार इनके उनको ये नजर आता है कि इनकी कितनी याशी, उनको ये नहीं नजर आता कि जो हम हेट बर्दाश्त करते हैं, जो गालियाँ खाते हैं, जिसका भी जो दिल करे आके, जस्ट बिकॉज यू हैव अ पब्लिक प्रोफाइल. सो आई फील के लड़कियों को जब तक आप
अपने अंदर सिक्योर नहीं करेंगे ना, वो यही करती रहेंगी दूसरों मैं के वही साथ। कहने लगी थी कि इतना वो इंटरनलाइज्ड भी है उस वक्त, सॉरी मैं आपको काटने भी लगी थी, सॉरी, पर आप जब कही थी कि डब्बों में डाला, वो इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, हाँ तो वो लड़कियों ने इंटरनलाइज भी किया, हमें तो प्रोटेक्ट किया Protect जा रहा किया है, हमें जा तो खैर, तो ऑल इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, बट एसेंशियली व्हाट यू वर डूइंग वाज दैट डिसएम्पावरिंग देम। बात ये है कि कोई नहीं कह रहा कि आप Taking उनको their 12 growth बजे रात away. को बाहर भेज दें, ये तो नहीं कह रहे ना हम। हाँ, लेकिन- या हम ये भी नहीं कह रहे कि वो बस फिरते रहें और नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको तो डब्बे में नहीं डालो। हाँ ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डब्बे में नहीं डालो, इंडिविजुअलिटी खत्म, उनकी एम्बिशन को डब्बे में नहीं डालो यार। मेरी बेटी Ambitions, कहती है मैंने एक्टर dreams. बनना है, हाँ मैंने सिंगर बनना है, तो ठीक है वो बाहर जाएगी और बनेगी, हाँ सीखेगी, करेगी। मैं कहा इफ यू आर गुड तो बन जाओगी, हाँ बट ऐसे नहीं हो सकता ना। आपके सारे बड़े अवार्ड कौन जीत के लाता है? लड़कियां ही। हाँ, सही बात है, दैट्स ट्रू। आपका ऑस्कर लड़की, आपका ग्रैमी लड़की। और ये नहीं है मैं बहुत ही पक्की वो वाली फेमिनिस्ट हूँ कि बंदे खरामी हैं और ऐसे नहीं है, बट आई फील के लड़कियों के हाँ मे बी दे आर नॉट फिजिकली एज पावरफुल एज मैन, बट यहाँ से हमने ही उनको ज़ीरो कराया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ग्रोइंग अप माई मम यूज्ड टू से बंदे ही अच्छा हेयर ड्रेसर होते हैं, बंदे ही अच्छे नाई होते हैं, बंदे ही अच्छे सब कुछ होते हैं, हर चीज़ में बंदे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि बंदियों को कोई किसी ने कभी करने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। घर में आपका काम है किचन चलाना, लड़की का काम है उसको खाना आना चाहिए। गो टू एनी कमर्शियल किचन, यू वोंट फाइंड अ गर्ल, Yeah, I know. इट्स ऑल मैन। Yeah. क्या ये अजीब कंफ्यूजन है भाई। That's true. सो जब तक लड़कियां स्ट्रांग नहीं होंगी तो ये गंदी सोसाइटी गंदी रहेगी। ये तो है। उन्होंने ही सिखाना होता है लड़कों को। हाँ। चले, हाँ, थैंक यू सो मच। कितना बोली मैं? बहुत अच्छा 1.5 किलो वजन कम हो गया मेरा बोल बोल के। थैंक यू थैंक यू। You're gonna have a long hard edit on this one. नो, ये तो फिर भी लाइक ए डिसेंट टाइम था, कभी कभार तो उससे भी ज्यादा 2 घंटे का चल जाता है। दिस इज अ गुड 1 hour 25 minutes की How podcast. long is your episode? Normally it's 1 hour 30 minutes. अच्छा, That's my मेरी कोशिश होती है, that's the best टाइम। कभी कभार वो 2 hours तक चली जाती है, लेकिन नहीं, वो the बहुत- video? हाँ, अच्छा, हाँ, podcast होती है, लंबी होती है। Yeah. Thank you so much for tuning into this thank you. episode of Happy Chirp. I hope that you guys enjoyed it. I hope that you guys learned something from it. I know I did. Please leave your comments below and your thoughts, your opinions on the same topics. We would love to read them. Don't forget to like, don't forget to subscribe, and I'll see you again next time. Allah Hafiz.